अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में बताऊंगा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है, क्या मतलब होता है, क्या इसका पर्पज़ है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल तौर पर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम डेली बेस पर आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लेकर आ रहे हैं जो आपके इंतहाई ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। क्योंकि दोस्तों टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको नाम से ही ज़ाहिर हो रहा होगा कि इसमें कोई हमारी अथेंटिकेशन होगी, यानी कि कोई अगर हमारे पास लॉगिन करना चाहता है कोई अकाउंट, मिसाल के तौर पर हमारा एक यूट्यूब चैनल है और वो लोग चाह रहे हैं कि इस चैनल को हम लॉगिन करें, लेकिन आप देखेंगे तो वहाँ पर एक टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा होता है, जिसका मतलब यही होता है कि टू स्टेप ऑथेंटिकेशन उसको लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी तो फ्रेंड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA is a technique used to increase the level of security by adding or additional step or component to the user verification process. Essentially, it requires the user to undergo two successful authentication before access is granted. Each of the required modes of authentication is usually one of the following: something the user now, something the user physically holds, something inseparable from the user body. Example of two-factor authentication: while undergoing an ATM transaction, the user must insert a bank card, something the user physically holds, and enter a password, something the user knows. These two factors together make it extremely unlikely that an unauthorized user is accessing the bank account. Other examples could be using a password and a fingerprint scan, or a password and a one-time password. Online two-factor authentication: many online services use two-factor authentication by sending a text message to the user's phone with a technique unique code that must be entered if the computer is not recognized. This form of two-factor authentication prevents anyone without the phone from accessing an account and gives a significant boost to the level of security. Sometimes companies may also use a smart app such as Google Authenticator to generate random codes that verify the user without sending a text. तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।